Hello everyone. Today we will talk about the third and fourth everyday application of IoT we have activity trackers and smart outlets. Okay. So third we have activity trackers. It's basically a continuously capturing the heart rate pattern, activity levels, calorie expenditure, and skin temperature in the smartwatch. Okay. And the fourth one we have smart outlets. Okay. So let's suppose a person wants to uh, control the his farm field through the smartphone. Okay, so he installed a motor which is connected to the IoT protocols, and the farm is completely sensorized. Basically, he also installed a sensor and IoT protocols to detect and monitor the health of the soil and health of the product, health of the vegetables and fruits, etc. Okay, so he getting all the information in the smartphone. Okay, so when the water supply demand happening, so he can turn on the motor through the phone. Okay, and when the water supply is over, means the demand is over, then the sensor giving to the मतलब कि जो सेंसर है यहाँ पे कोई सेंसर होगा, वो इसको नोटिफिकेशन देगा कि अब यहाँ पे डिमांड खत्म हो गया है वाटर सप्लाई का, तो यू कैन टर्न ऑफ योर मोटर. ओके, सो he can turn off his motor through the smartphone. Okay, and the next we have that suppose when at a some time, when the motor getting मोटर गेटिंग मतलब कि खराबी आ गया मोटर पे, तो उसको प्रेडिक्ट करने के लिए, उसको भी प्रेडिक्ट करने के लिए कोई सेंसर हो या तो कोई प्रोटोकॉल ये सब होना चाहिए. तो वो इसमें भी लगाया जाए. इसमें भी अगर मान के चलिए वो लगा दिया कि अगर मान के चले कोई खराबी आया मोटर वोटर में आएगा फ्यूचर में, तो इससे पहले हमको ये नोटिफिकेशन दे दिया जाए. ओके, या तो कहीं कहीं और कहीं फार्म फील्ड में या तो कोई खराबी आया, तो ये नोटिफिकेशन हमको आ जाए पहले से. ठीक, सो थैंक यू.